morning. Today, the students of Grade IV Sapphire are here to proceed with the events of the assembly. It's always good to start a day inviting the presence of God. So, let's praise our Lord and Savior with a prayer song. The Word of God is the light to the way of our lives. Let's listen to the Word of God, which will be read by Slaylin. Good morning. Today's Bible portion is taken from Psalm 150, verse 1 to 3. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with the trumpet sound, praise Him with the lute and harp. And now, let's join the hands with devotion as Alan Daddy leads us with the Lord's Prayer. And we repeat the prayer after me. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Sharing a good idea in the morning will activate our minds with the right fear. Here is Shana to start this day with a refreshing thought. Good morning. Today's thought: simplicity is the prerequisite for reliability. I repeat the thought again. Simplicity is the prerequisite for reliability. Thank you. And here is Vaishak to update us with today's news headlines. Good morning. Today's news headlines. National news. Trump 25% tariff on Japan and South Korea. And the Narendra Modi starts to make rich people so more rich in India. State news. Kaveri River has released up to 250 liters of water. And Chennai starts to count the total population of people in the Chennai sports news. The India team get practice for the third match with England, and Akash Deep took near 5 to 6 wickets for the India team in second match. That's all for today. Thank you. Now, Ria is ready with a drop of wisdom from Tirukkural. வணக்கம். இன்றைய திருக்குறள். கண்ணுடையர் என்பார் கற்றோர், முகத்திரண்டு புண்ணுடையவர் கல்லாதவர். இத்திருக்குறளின் பொருள் என்னவென்றால், கண்ணுடையவர் என்று உயர்வாக கூறப்படுகிறவர் கற்றவரே ஆவர். கல்லாதவர்கள் தம் முகத்தில் இரண்டு புண்ணுடையவர்கள் ஆவர். மீண்டும் குறள். கண்ணுடையர் என்பார் கற்றோர், முகத்திரண்டு புண்ணுடையவர் கல்லாதவர்கள். நன்றி. இந்திய நாள் இனிய நாளாக அமைய என் வாழ்த்துக்கள். Thank you, Leah, for presenting Thiruva's words of wisdom. Here is Steve to remind us the etiquette. Good morning. Today's etiquettes are about general rules for all students. Students must bring the school diary regularly. Be punctual to all classes and school events. All students must converse only in English inside the school campus. Always follow the class rules. Thank you. Alston and Jafrin are here to present English today. Hi Alston. Hi Jafrin. Did you tell anyone about the surprise party we planned for Kenneth? Oh no, I spilled the beans. Spill the beans, what does that mean? It means to tell a person about something that should be a secret. Oh, okay, no worries. Thank you for teaching a new idiom. It's my pleasure. Bye. That was quite interesting and informative. Thank you so much. It's time for a special program. Tick 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 tick. कसम ये खाए रे. Tick 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 tick. Plastic tick मार पाए रे. Tick 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 tick. कसम
पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो हम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, ये बहती सी है नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। कि करदर है धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाएंगे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन प्लास्टिक में जहाँ देखो प्लास्टिक में, सिचुएशन प्लास्टिक में जहाँ देखो गैरी बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैलाए, ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। And thank you one and all. Have a beautiful day